Dear students, I would like to present to you the concept of the correlation coefficient, which I am sure you already know is a very, very important concept. And I'm going to discuss it with you at this moment in time with respect to a bivariate probability distribution. So let capital X and capital Y, the two random variables X and Y, have the joint PDF small f of X, Y. Then we can talk about U of X, Y, meaning any function of X and Y. And if this expected value of U, X, Y exists, then it can be determined. Its algebraic expression can be found. And whatever I'm going to say to you now, in this we are going to assume that all the mathematical expectations do exist. All right? If that is the case, then first and foremost, let us consider what we can do to get the mean of the random variable X and the mean of the random variable Y. अगर हम expected value of X को mu1 से denote करें और expected value of Y को mu2 से denote करें, तो आप note करें कि it's as simple as this, कि ये जो हमारा function था और या है U of X, Y, अगर उसको रख दें equal to X, तो obviously expected value of uxy will then be equal to expected value of x, and that is mu1, the mean of the random variable x. इसी तरह, if we let uxy be equal to y, then expected value of uxy is obviously equal to expected value of y, yani the mean of the random variable y, which we can denote by mu2. इसी तरह, we can also, of course, find the variance of x and the variance of y. अगर हम variance of x को sigma 1 square से denote करें और variance of y को sigma 2 square से denote करें, तो ये जो हमारा uxy है, उसको क्या रखेंगे तो हमें sigma 1 square मिलेगा. Obviously, we should say that uxy is equal to x minus mu1 whole square. Then, obviously, the expected value of uxy will be the expected value of x minus mu1 whole square. In other words, the variance of x, which we can denote by sigma 1 square. इसी तरह, बिल्कुल इसी rationale के मुताबिक, you can also find the variance of y, and that is denoted by sigma 2 square. अच्छा, अब means भी आ गई, variances भी आ गए. Now I'm going to present to you the concept of the covariance. My dear students, if we put this function u of xy equal to x minus mu1 multiplied by y minus mu2, then the expected value of uxy will be equal to the expected value of x minus mu1 into y minus mu2. So this is what is called the covariance of x and y. इसमें एक चीज आप नोट करें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. जो वेरिएंस ऑफ x है वो क्या होता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस mu1 होल स्क्वायर. अब ये होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि गोया आप x माइनस mu1 को x माइनस mu1 ही के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो गोया आप ये कह सकते हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस mu1 into x माइनस mu1. दैट्स द वेरिएंस ऑफ x. इसी तरह वेरिएंस ऑफ y, it is the expected value of y minus mu2 whole square. दूसरे लफ्जों में, it is the expected value of y minus mu2 into y minus mu2.
तो आपने देखा कि वो दोनों अगर x वाली चीज़ें हैं तो दैट इज़ द वेरिएंस ऑफ x, दोनों फैक्टर्स अगर y वाले हैं तो दैट इज़ द वेरिएंस ऑफ y, और जो कोवेरिएंस है जो मैंने अभी आपके सामने रखा उसमें one of those factors is the one which has x and the other one is the one which has y. So it's the covariance of x and y. So let me say it again. The expected value of x minus mu1 into y minus mu2 is called the covariance of y, and it is denoted by COV and then the bracket x comma y. अगर इसकी shortcut formula अगर हमने इसका निकालना हो तो we can do that, and you can now see it on the screen. Expected value E जो है वो बाहर लिखें, और अंदर जो दोनों ब्रैकेट्स हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, x इंटू वाई माइनस म्यू टू इंटू एक्स माइनस म्यू वन इंटू वाई प्लस म्यू वन म्यू टू. उसके बाद ये जो एक्सपेक्टेशन का जो ऑपरेटर है उसको आप अंदर ले जाएं, वो हर एक के साथ अटैच हो जाता है. सो व्हाट डू वी गेट? इट इज़ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस म्यू टू इंटू द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स. क्योंकि वो म्यू टू कॉन्स्टेंट है तो वो बाहर आ जाता है, और आई मीन अगर आप लिख रहे हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ म्यू टू इंटू एक्स तो उसमें से म्यू टू बाहर आ जाता है, एंड वी गेट म्यू टू इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स. उसके अगला क्या है? माइनस म्यू वन इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, और लास्ट क्या है? प्लस म्यू वन इंटू म्यू टू. एक्चुअली आपने लिया expected value of mu 1 into mu 2, but because mu 1 and mu 2, each one of them is a constant, so their product is also a constant. तो आप जानते हैं कि expected value of a constant is equal to that constant. So that's what we get. और इसके बाद आप नोट करें very interestingly कि this is further equal to expected value of xy minus mu 2 into mu 1 minus mu 1 into mu 2 plus mu 1 into mu 2. तो जाहिर है कि वो एक माइनस उस प्लस के साथ कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनली द फाइनल रिजल्ट इज दैट द शॉर्टकट फॉर्मूला फॉर द कोवेरिएंस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस म्यू वन म्यू टू, जिसको हम यूं भी कह सकते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई minus expected value of x into expected value of y. आप कहेंगे कि मैं तो correlation बताने लगी थी, but I have spent so much time on the covariance. Well, that is because the covariance is such an integral component of the formula of the correlation coefficient. As you can now see on the screen, the distribution, bivariate distributions correlation coefficient rho, this is a Greek letter, it is pronounced rho. This is equal to the covariance of x and y divided by the standard deviation of x into the standard deviation of y. जाहिर है कि वेरिएंस ऑफ एक्स जो है उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, और वेरिएंस ऑफ वाई का स्क्वायर रूट, दैट विल गिव अस द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई. सो कोवेरिएंस जो है एक्चुअली उसका कलीदी किरदार है इसके अंदर, और कोरिलेशन का ये जो फॉर्मूला है, ये जो डिवाइड किया है ना हमने स्टैंडर्ड डिविएशंस के प्रोडक्ट से, because of that we get this very very important and interesting property that the correlation coefficient always lies between -1 and +1. Now I would like to give you an example. Suppose that the random variables x and y have the joint PDF given by small f of xy is equal to
x plus y for the support 0 less than x less than 1, comma 0 less than y less than 1. यानी अगर आप इसको इस तरह कंसीव करें कि एक 3 डायमेंशनल स्पेस जो है, जैसे एक जिस कमरे के अंदर मैं खड़ी हुई हूँ, ये जो फ्लोर है दैट इज द एक्स वाई फ्लोर, और इस फ्लोर का कौन सा पोर्शन जो है वो हिस्सा है कि जिसके ऊपर हमारी ये सरफेस खड़ी हुई है, जिसकी मैथमेटिकल इक्वेशन जो है वो ये है कि एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई. फ्लोर का वो हिस्सा एक्स वाई इज 0 to 1 और वाई वाई इज ऑल्सो 0 to 1, यानी एक रेक्टेंगुलर या बल्कि स्क्वायर कह दें पोर्शन ऑफ द फ्लोर. उसके ऊपर ये आपका प्लेन, बिकॉज एक्स प्लस वाई ये जो है इट इज़ एक्चुअली द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन. ये एक प्लेन है जो इसके ऊपर है. इट इज़ ये आप खुद इसको सोचिएगा कि इज इट horizontal or is it inclined. I'm wanting to talk about the correlation coefficient. Given this particular bivariate distribution, if I want to compute or to determine the correlation between x and y, how will I start? अभी मैंने आपके सामने फॉर्मूला रखा था और वो चीज़ें मुझे निकालनी है और उसके बाद I will get it. So first and foremost, let us find the mean. So just simply do what you need to do. You take the integral of what? You find the integral from 0 to 1 of x into g of x, and the integral also is with respect to x. तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले आप मार्जिनल निकालेंगे और उसके बाद ये निकालेंगे. And you can do it yourself and the answer comes out to be 7/12. इसके बाद let us also try to find the variance of x, और उसके लिए we use the shortcut formula. Variance of x is equal to e of x square minus e of x whole square. तो e of x यानी mu1 तो अभी हमने निकाल लिया 7/12, उसका स्क्वायर करके हम वहाँ पुट कर देंगे. अभी उससे पहले e ऑफ एक्स स्क्वायर हमें निकालना है, तो उसी तरह जिस तरह अभी e ऑफ एक्स निकाला था, what will you do? You will simply take the integral from 0 to 1 of x square into g of x with respect to x. Marginal जो है वही इस्तेमाल होगी, and doing that you can get the answer and then do the rest of it, and the variance comes out to be 11/144. इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह, we can find the mean of the random variable y. That also comes out to be 7/12, and we can also find the variance of the random variable y. That also comes out to be 11/144. अब इसके बाद let us try to find the covariance of x and y. According to the shortcut formula, it is the expected value of xy minus mu1 mu2. mu1 into mu2, 7/12 into 7/12, वो तो हम कर लेंगे. क्वेश्चन ये है कि जो पहला पार्ट है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई, ये हम कैसे निकालेंगे. स्टूडेंट्स, इसमें आप मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल नहीं करेंगे. फॉर दिस वन यू विल यूज द जॉइंट PDF, and the expression will be as follows. The integral from 0 to 1 and then another integral from 0 to 1 of x y into f of x y with respect to x and with respect to y. अब यहाँ f of x y क्या है? It is x plus y. So what do we have? We have double integral दोनों from 0 to 1 x y into x plus y dx dy. इसको आप सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, एंड व्हाट डू वी गेट? द आंसर comes out to be -1/144. -1/144. Okay.
All right, now that we have got all these things, we can very quickly find the correlation coefficient. Rho is equal to minus 1 over 144 divided by the square root of 11 by 144 and again the square root of 11 by 144. क्योंकि वो दोनों बराबर हैं तो वो इसलिए एक ही नंबर दोनों दफ़ा. So what do we get? Minus 1 over 144 divided by 11 by 144. So obviously 144 will cancel out and we are left with minus 1 over 11. और अगर उसको पॉइंट्स में ले आए तो what do we have? We have minus 0.09. And this indicates that for this particular bivariate density function, f of xy is equal to x plus y, where both x and y are going from 0 to 1, there exists a very weak negative linear correlation between x and y. ये मैंने क्या कहा? A very weak negative linear correlation between x and y. वजह इसकी ये है कि -1 से 1 के बीच में लाई करता है. -1 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं. लेकिन जो अहम बात है वो ये है that the closer your answer is to 0, the weaker is the correlation. अब यहाँ चूँकि minus 0.09 है, it is pretty close to 0, and that is why I am able to say that for this particular density function, there exists a very weak negative correlation. Linear का लफ्ज़ मैंने क्यों इस्तेमाल किया? Because this particular formula measures the strength of the linear relationship between x and y.